and 4 is more than 50, which is basically super obesity, which means you will definitely have problems there. Okay? Voice not clear. What we are discussing today is obesity in pregnancy. So we start with the classification. I hope you can hear me properly now. This is just a definition. Pre-pregnancy is the main word you need to focus on whenever you're talking about pregnancy. इसीलिए the antenatal care of any girl actually starts pre-conception. Well done. Okay. And this is another risk factor of pregnancy that we're bringing up. So we're trying to go through them. Somebody has given me a list of those things, the labor room problems or protocols. I think we should have that thing sorted so that in your sleep you can do that. And that's something I think should be there in every labor ward. So super obese is 50 or more. Class 3 in that category would fall between 40 to 50. Okay. My BMI is 27.4. Yes, I calculated that. That's overweight. That is overweight. Okay. Quite shameful. But 25. So 25 26. 25. I don't know anything about armies anyway. Okay. All right. Acha, pathophysiology mein upar wali line is very important. Number 1, the fat that you see is actually an active endocrine gland. ठीक है जी? ठीक है कहना. Just check me on this. ये भी बात हो रही थी ना? So there are 3 pathways metabolically, vessels के अंदर, और सबसे ज्यादा जरूरी inflammatory pathway जब activate होता है तो क्या चीज निकलती है? साइटोकाइन्स वगैरह निकलती है ना. So these 3 इन 3 areas पे ये जितनी फैट होगी उतना ज्यादा इफेक्ट होगा. ये डीरेगुलेट करेगा कहाँ काफी ज्यादा organ systems. Basically it becomes a multi organ problem. और आगे चल के when we go into more details, so you will see that it affects the brain. Things which you thought it doesn't affect, but it does. And then they think that these things go hand in hand. कि वो होगा तो ये होगा, and every time when they're doing studies, obviously वो उनके अंदर घुस के तो नहीं बता सकते ना कि जिस वजह से हो रहा है. वो ये देखते हैं कि जी इतनी obesity में इतनी ज्यादा ये problem चल रही है. So it's in a way everything is linked. But remember this: if you think fat is nothing, fat is an active endocrine gland, adipose tissue. Excess में होगा, everything which is in a balance is reasonably all right. People like me who are like 27 BMI, which is quite shocking. But you know, in the deregulatory effects on metabolic, these gene systems याद रखो, particularly inflammatory. और फिर उसके बाद होगा क्या होता है फिर जो हमारा वाला मसला एडवर्स ऑब्स्टेट्रिक आउटकम. अच्छा, अब ये गेम यहाँ पे शुरू होती है क्योंकि यहाँ anybody familiar with this Barker's hypothesis? This is what you were telling me about genetics जो तुमने बात की थी ना. Absolutely right. 1986 से लेके 1990 तक, this is fairly recent as far as the medical science is concerned, कि उन्होंने ये सोचना किया है कि एवरी जो एडल्ट में किसी को प्रॉब्लम होती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फीटल लाइफ. ठीक है, फिर ठीक है. अब व्हाट इज ये, अब लिखा हुआ एक लाइन लिखी हुई है एज अ रिजल्ट ऑफ एपिजेनेटिक. एपिजेनेटिक एक ऐसा लफ्ज है कि मुझे इसकी कोई चीज मिल नहीं रही थी तो मैंने उसी तरह. ठीक, व्हाट इज एपिजेनेटिक? Epigenesis is epigenetic या genetics is a study जहाँ पे वो ये बताता है कि जो जीन्स होती हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करती हैं और यूज कैसे करती हैं. ठीक है, डीएनए जो होता है, जो अंदर आपका जो कोर होता है जिसकी वजह से आपको सारा मिलता है, वो चेंज नहीं होता, लेकिन जो जीन का एक्सप्रेशन होता है ऑन अ सेल वो चेंज हो जाता है. और ये कैसे चेंज होता है? ये चेंज इसलिए होता है कि the fetus is inside the mother's womb for at least 9 months. ठीक है,
and if there is obesity, जो पहली वाली बात हमने की थी, वहाँ पे metabolic level पे, vascular level पे और inflammatory response होता है to excess adipose tissue. This sort of exposure जो उससे होता है, फिर उस वजह से exposure किस चीज का होता है, ग्लूकोज ज्यादा होती है, इंसुलिन ज्यादा होती है, लिपिड्स ज्यादा होते हैं, फिर inflammatory cytokines ज्यादा होते हैं. During development उस बच्चे को 9 महीने के लिए he has a more than usual exposure to these things for a period of good 9 months, which in itself अब वो epigenetic changes हैं, तो ये DNA ही alter होगा, लेकिन उसका expression और उसका usage जो होगा cells से वो alter हो जाएगा. This can lead to transient, temporary or permanent changes in metabolic program. अब इस चीज से लेके ये पाइजन का नाम बार्कर साहब है, ठीक है, और इसने कहा था कि ये लेटर लाइफ में जाके when the child is grown up, middle age, adult age, अपना उसमें चीजें खराब होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है, और इसीलिए they've been trying to find the cancer gene, they've been trying to find the obesity gene, they've been trying to find things if we can correct things. सर आपकी आवाज ना बार बार कट हो रही है, बाद में स्लो, बाद में फिर लाउडली हो रही है और फिर स्लो और लाउड, समझ नहीं आ रही. आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें, आवाज क्लियर आ रही है. सर ठीक है. राज के लिए. अच्छा ठीक है जी, दोबारा कर लेते हैं, सॉरी. तो द हाइपोथेसिस इज बार्कर साहब 1986 to 1990 में उन्होंने हाइपोथेसिस होता ये है कि मैं आई से कि ये दुनिया गोल नहीं है, ठीक है, और मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, मेरे पास कोई इसकी कोई एविडेंस नहीं है, आई जस्ट से दीस थिंग्स and then it's up to other people or me to prove myself right or to prove myself completely wrong, ठीक है, that's the hypothesis. So he had this idea कि यार ये जो सारा कुछ हो रहा है, it starts from the ये fetus में तो नहीं मसला, तो वो जो पहले बात हो रही थी, so these transient या permanent changes which happen in metabolic programming, वो बच्चे की जो क्या कहते हैं, एक होती है ना biological clock होती है, the mother actually realizes, and all of you who are mothers would know, I have no idea, okay, but they say that there's a certain time in the day when the baby becomes more active, and you sort of know when the baby is still in your womb that ab ye the baby is supposed to get active, and then you get worried when he's not active or she's not active at that time. इसी तरह की this is some sort of a programming which is done to the baby, उसने अपना, that's his normal or her normal. यही metabolic programming which is supposed to be the baby's normal, this subtly changes at a cellular level, और वहां से फिर effects होते हैं which are शायद वो कुछ भी ना करें, थोड़ी देर के लिए करें, लेकिन sometimes होता यह है कि they last forever. So this is the main pathobiology of obesity, कि जी ऐसे होता है, और इसकी वजह से the effect that is causing the baby, particularly in our field, we're dealing with obstetrics, ठीक है. तो adipose tissue क्या है? Congratulations, तुम लोग थे तब, एक बता तो नहीं था, 100% fashionably late, typical lorry. अच्छा, alright, adipose tissue था active endocrine gland. एक्टिव एंडोक्राइन ग्लैंड वो जितनी एक्सेस में होगा उतना ज्यादा मसला करेगा. मसला कैसे करेगा? इट विल बेसिकली रेगुलेट एक चीज होती है जो कि बैलेंस होता है, उस बैलेंस को शिफ्ट कर देगा, डीरेगुलेट कर देगा. कहाँ मेनी ऑर्गन सिस्टम्स में कैसे पाए, सबसे जैसे जो जरूरी वाली बात वो इंफ्लेमेटरी है जो कि बार बार आएगा, उसके अलावा मेटाबॉलिक और वैस्कुलर, ठीक है, ये करेगा. बेसिकली ये समझने वाली चीज है, बाकी इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं. और दूसरी थ्योरी ये है कि इस चक्कर में ये fetal origin of adult disease, ये this was the paper that it was written, इसका हाइपोथेसिस था बार्कर्स का. इस पर काफी लोगों ने काम करना शुरू कर दिया और कुछ ना कुछ पहुंच गए कहीं ना कहीं. Epigenetic changes, everybody should Google epigenetic and then see the correct meaning. Like in my point of view, it's basically how genes express themselves
and how other cells, how they are used by other cells. और उनका एक बेसिकली मैसेज कैरी करती है ना, भाईजान आज तू किसी 9 बजे उठना है तो 4 बजे सो जाना, ठीक है, तो जीन ने मैसेज कैरी कर दिया। आगे से ऊपर आया जी कोई साइटोकाइन कोई और कोई तमाशा, उसने आगे का नहीं भाईजान तो 3 बजे उठना, ठीक है, और वो थोड़ा सा सटल सा चेंज हो गया विद द पीरियड ऑफ टाइम। And because of the fact that adipose tissue metabolic problems करता है, insulin, glucose, lipids, inflammatory cytokines during development, उस बच्चे पे in excess levels, remember the thing is excess levels, वो उस पे act करती रहती हैं, जिसकी वजह से उस बच्चे के अंदर temporary या permanent changes हो जाते हैं। उसकी programming, उसका DNA नहीं बदलता, ठीक है, उसकी programming में थोड़े से changes हो जाते हैं। And that is basically the hypothesis कि ये दो तरीके से obesity will have a detrimental effect on the baby। अब ये अमेरिका वालों के साथ बहुत ज़्यादा मसला है, इसलिए मुल्क से बाहर निकलोगे तो obesity हो रही होगी। 40% reproductive age की औरतें in America are obese, ठीक है, any level। Severe obesity यानी कि 40+ BMI वाले लोग, both males and females, 100 में से 9 लोगों को है। So you can imagine कि हर दूसरा तीसरा बंदा, और हर लेवल पे आपको प्रॉब्लम होगी with dealing with these patients, हर लेवल पे। Your history taking तो चलो तुम फिर भी थोड़ा बहुत कर लोगे। As soon as you start examining that patient, you will run into difficulties. You'll second guess yourself. आप उसका वेट करते हो, BMI निकालो हर पेशेंट का as a rule, important है। वो 30 क्रॉस करे तो लिखा होना चाहिए, हाईलाइट होना चाहिए कि इट्स अ रिस्क फैक्टर, ठीक है जी। वो if that patient is she's like 35+ BMI, पहला मसला क्या पड़ेगा तुम्हें, एग्जामिनिंग है, बीपी नहीं होगा, हाँ बीपी कब, हाँ बीपी कब छोटा होगा, बड़ी कॉमन बात है, ठीक है। और abdominal examination, हाँ डोमिनल एग्जामिनेशन पे आप जलील हो जाते हैं, आपको समझ ही नहीं आती, आप अपनी जरूरत चीजें बन गए इधर है कहाँ, ठीक है। एंड दैट्स आगे चल के जब इसकी कॉम्प्लिकेशंस में आती हैं तो उसमें लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज भी एक चीज है। लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज इसलिए होता है क्योंकि 90% तो आपको समझ ही नहीं आती कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से खत्म करूँ, तो आपकी फिर आप एट एवरी लेवल फिर हार्ट ढूंढने में आप जलील हो जाते हैं, ठीक है। then you doing a scan, then you have another issue, IV line लेना, blood draw करना, anesthesia वाले से पूछना when she's in labor, उसकी from a obstetric point of view उसकी pains palpate करना, हर उसका 15 आधे घंटे बाद उसका ब्लड प्रेशर चेक होना चाहिए, उसके लिए काफी होनी चाहिए कि सेपरेटोरियल मिल रहा है, उसको फाइनल कोई रीजन एनेस्थीसिया मिल रहा है, वो रुल जाते हैं। आप उसकी डिलीवर कराएं, उसको मॉनिटर करें, I mean it's a ठीक ठाक मसला। एंड सो इट शुडंट बी, ये आपकी थ्रू आउट आपकी एंटीनेटल पीरियड में देयर विल बी अ चैलेंज टू यू, बिकॉज योर ओन क्लिनिकल जजमेंट, एनीथिंग व्हिच शेक्स यू अप इन द सेंस मेक्स यू नर्वस गोइंग अप्रोचिंग अ पेशेंट इज नॉट राइट। कि आप जाते हो, आप अपनी तरफ से कहते हो कि ये कर लेते हैं और कुछ भी नहीं समझ आ रही, ठीक है, उसी वक्त आप अंदर से आप हिलते हो कि मुझे समझ ही नहीं आई ये क्या हुआ। स्कैन की प्रोब रखते हो, वो ठीक तरह आपको नजर नहीं आता, आप कंप्लीटली हिल जाते हो, और देन you start second guessing, and as soon as you start second guessing yourself, questioning your own ability, any sort of issue that arises after that is an issue. So potential issues क्या हैं in pregnancy? ये severe morbidity mortality के ये 7.5 लाख I think 7.5 लाख को इंग्लिश में क्या कहते हैं, 750,000 लोगों के साथ जान लो। there was a population study जो वहाँ पे हुई थी, तो उसमें अब देखते जाओ जैसे जैसे वो नीचे ओबेसिटी बनती है, सिवियर मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी क्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, कंग्रेचुलेशन, लेकिन ज्यादा बढ़ रही है और डर लगता है फिर। पोटेंशियल इश्यूज इन प्रेगनेंसी क्या क्या है, ये वही चल रहा है, सुबह मोर्बिडिटी, हेमरेज, ज्यादा चांसेस, मेडिकल डिजीज में रेस्पिरेटरी, कार्डियक, सेरेब्रोवास्कुलर, हेमेटोलॉजिकल, सारा कुछ ज्यादा हो जाता है, सेप्सिस, शॉक,
hepatic renal failure, complications of anesthesia. Ask the anesthetist. You come across a patient with a BMI of 40 plus, they'll let you know if it's an issue. It's a major issue. चलो ये तो रट्टे वाली बात है. अब antepartum पे आ जाओ. Antepartum पे potential problem, and whenever you're going to deal with pregnancy, पहले भी तुम्हें बताया हुआ है, divided. Preconception क्या है, antepartum क्या है, intra-partum क्या है, post-partum क्या है, और फिर in this case आगे जाके later life में क्या क्या हो सकता है. Because this is such, I'm just going to focus on the complications today, and I'm going to focus on the other bit, which is how you care for them. जो कि तुम्हें idea होना चाहिए by now कि कैसे ऐसे करना है, लेकिन you need to understand the extent of the problem. That's why I was telling you. I mean, preeclampsia, diabetes is fine. It's always there, but then everybody knows about it, and you know how to handle this. इसमें थोड़ा मसला पड़ता है क्योंकि you don't know कि किस level की बात हो सकती है. So you should be careful as soon as the BMI is, 35, 32, 33, then थोड़ा सा ready हो जाओ कि कुछ हो सकता है. Early pregnancy loss. These are two basically hypotheses. क्यों होता है? Unfavorable hormonal environment because of the earlier thing that we spoke about, and और के PCOS लड़कियों में, फिर इनमें ख़वातीन में फिर याद है PCOS भाई है, वो बहन है, वो हर जगह चल पड़ती है, किसके साथ चल पड़ती है, किसके साथ चल पड़ती है. हमारे मुल्क में तो मेरा ख्याल है 20% से ज्यादा PCOS है. ठीक है, हाँ, जरूरत से ज्यादा डायग्नोज हम भी करते हैं, और कोई और समझना PCOS लगे. ठीक है, तो हाँ, तो ये हो सकता है कि ना हो, इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं. डायबिटीज दोनों तरह की. It's a major risk factor for occult as well as GDM. What is occult? What is the meaning of the word occult? Good. Due to exaggerated increase in insulin resistance, इसमें ज़्यादा होता है, तो इस वजह से GDM होती है. Not the other one. ये GDM वाला है. Yeah, I was probably asleep. Okay, maybe I was. ये नीचे वाली लाइन देखिए, ये पहले भी तुम्हें पढ़ाया था. ये प्रीक्लैम्शिया वाली कि BMI के 5 से 7 के इंक्रीज में उसका रिस्क डबल हो जाता है. ठीक है, अब ये भी शुगर है. देखो जरा, ऊपर वाली लाइन पढ़ो और नेक्स्ट लाइन पढ़ो. प्री टर्म भी होता है और पोस्ट टर्म भी होता है. प्री टर्म क्यों होता है? सोचो, थिंक अबाउट. वो जाते होंगे ना पेट्रोल. कॉमन सेंस की बात है, कोई वाटर कूलर की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें. सोचो, इंडिकेटेड एंड स्पॉन्टेनियस प्री टर्म बर्थ. अब तो देख लो, हम खुद करते हैं. हाइड्रोजेनिक होता है ज्यादातर. क्या आप नहीं डर जाते हैं एज एन ऑब्स्टेट्रिशियन? आप कहते हैं इसे डिलीवर कराओ, कुछ करो इसका. हाँ, डॉक्टर ने बताया. हाँ, वो भी Did you induce it? नहीं, cesarean elective. अच्छा, सेकंड किया. Precious pregnancy. तो 3 लोगों ने इसका पेट पकड़ा होगा, 4 लोगों ने. Staff don't watch it. When we were there, what they used to do was they used to routinely, the girls used to, हाँ, वो जो टाई कर देती है उसमें. नहीं, वो जब 2-3 लड़के इकट्ठे आए थे तो फिर हमने कहा रहने दो. बड़ा बुरा है. नहीं, बड़ा कुछ देखा हुआ है, कोई इंडिकेट करता है क्योंकि उसमें डायबिटीज होती है. अभी पिछले 3 चीजें तुमने पढ़ी है, उसमें प्रीक्लैम्शिया के चांसेस ज्यादा होते हैं. उसमें डरपोक आदमी होता है, आगे मेरी तरह का कोई ऑब्स्टेट्रिशियन, जो कि कहता है कि भाई मैं डर गया हूँ, मेरी समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है. there are 10,000 different reasons why it's basically nitrogenic, और आपने खुद किया, इंडिकेट किया हुआ. स्पॉन्टेनियस के भी चांसेस ज्यादा होते हैं. और इसमें जो दिया हुआ है, जो क्वेरी हाइपोथेसिस है, उसमें ये है कि जैसे कि बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएटिंग लेवल्स ऑफ द, ये क्या कहते हैं इसे, हार्मोन है कि रिलैक्सिन, ये सर्वाइकल इंटेग्रिटी को मेरा ख्याल है कायम रखता है.
और उसकी लेवल्स के साथ कोई आगे पीछे होता है जिसकी वजह से कहते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस रिटर्न बर्थ हो सकती है. नथिंग यू नीड टू रिमेंबर, जस्ट आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू इट, तो मुझे याद आ गया. पोस्ट डेट क्यों होता है? सोचो, अकल से इस्तेमाल करो. अभी बात कर रहे थे उससे, आपको पता नहीं चलता. ठीक है. एंड दूसरा होता ये है कि जी आप चाह रहे होते हैं कि आप पीट जाए, ट्वीट कर दिया, वो आगे वो ऊपर हो जाता है काम. ठीक है. तो थर्ड इज मल्टीफीटल प्रेगनेंसी इंक्रीज होता है जी. डायज़ोगोटिक ट्विंस बिकॉज ऑफ ओबेसिटी की वजह से ये हो जाते हैं. probably related to ये कहते हैं high FSH level. Now relaxin, high FSH level, the earlier what we said about the first trimester thing, it's all hogwash, and not hogwash, but it's basically thread. It's theories. You don't need to remember this. But just for the sake of making it interesting rather than having it, so you need to know so that you can say a few words about it. Huh? Also, मल्टीफीटल प्रेगनेंसी के चांसेस 20 women में ज्यादा हो जाते हैं. Probably related to high FSH level. Nobody really knows. And the other reason, अगर आप logically सोचो तो क्या होगा? क्यों होती है मल्टीपल प्रेगनेंसी? क्योंकि वो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स ज्यादा लोग यूज करना शुरू हो गए हैं. They become more common. Conceive करते वक्त ये हमेशा याद रखें. The age, the first time mother वाली जो age है, जहाँ पे पहली बार she conceive, it is getting, it is getting on a bit. And then usually what happens is that she was sitting in an OPD in the gynae clinic, and then this 35-year-old, very well dressed, or बड़ा उसने वो suit पहना होगा, and you introduce yourself as a lawyer and stuff. आप suddenly video मुकदमा, and then she'll say, I want a baby. So she'll be alone, and so she will have, so you need to guide her along the whole process, and she'll be a single mother, and she'll be getting donor sperm from somewhere, and she'll be very organized. She'll be financially extremely well off, very confident, और उसे पता होगा exactly मैंने क्या करना. And then they have these lists where they say, okay, these are sperms of athletes, these are the sperms from high IQ people. Then they'll say, okay, this sperm belongs to a 6'4" blonde German athlete or something. This तरह की भी है. So then they buy it. Then they get their eggs frozen. What about the people who donate? So, that sort of thing. So they go through incredible details currently just to make sure that, the guy is healthy, and then they'll have all the, those people, the IVF clinics actually sell this knowledge. या उनका marketing tool होता है कि जनाब हमारे पास इतना बड़ा sperm bank है, और ये बंदे जो हैं इनको कोई disease नहीं थी, athletes थे, बड़े fit थे, बड़े ये वो थे, तो वो आगे से वहां से फिर. So quite a lot of people are doing this also. So, that's probably the reason for this thing. Okay, ART जो है बढ़ रही है, so most probably in every case that you study as far as obstetric complications are concerned, the chances of multiple pregnancies बढ़ते जा रहे हैं. Obstructive sleep apnea मेरा ख्याल है इसका कोई with related to weight. If you have a certain amount of weight, तो उसके बाद बढ़ जाता है. I have no idea क्या होता है. So carpal tunnel syndrome is again. कौन सी नर्व कंप्रेस होती थी? क्या करते थे? ट्रीटमेंट क्या? कॉमन बात है लेबर की. कहाँ दर्द होती थी? यहाँ. Decompression is the last resort where you do surgery. Physio और splint लगा देते हो. और इंतजार करते होते थे कि when the pregnancy is when you deliver, then inshallah it will get better. If it doesn't get better, then you make a cut here and decompress. Detection of inherited anomalies. Why do you think it's reduced the detection rate? That's another issue. नहीं पकड़े जाएंगे.
just because the sheer weight of the patient, it's very difficult to actually do a 4D, 3D heart count or with accuracy, or even with the best machines, even with the best operator. अगर आप स्कैन पे या अनोमलीज पकड़ने के लिए जा रहे हैं, जो आपका स्कैन जो डॉक्टर तला करते हैं, ठीक है, इट हैज आई थिंक उन्होंने लिख के भी लगाया होगा किसी जगह पे, हाँ मिस हो सकती है, हाँ ठीक है, अच्छी खासी कहेंगे 55 to 60% आप पकड़ते हैं, 30-40% अल्लाह के हवाले, तो दैट्स द थिंग। हार्मनी हो रहा है यहाँ पे, यहाँ बाहर जाता है, चलो that's another thing, that's another topic anyway, आगे चलो। Intra-partum, for some reason the first stage takes longer, second stage पे कोई इफेक्ट नहीं है वैसे, to be honest। जाहिर है कि कोई भी इशू होगा प्रेगनेंसी में, कोई भी रिस्क फैक्टर होगा, हमेशा अगर आपको और कुछ समझ नहीं आ रहा तो कहना जी इंक्रीज रिस्क ऑफ इंडक्शन, ठीक है, जी हम तो खुद ही कर देंगे। लेबर ड्यूरेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है, वही फर्स्ट स्टेज वाली बात है, इस पे कोई इतना ज्यादा ना करना, लेकिन कहते हैं कि जी प्राइमेट्स में, अब मैं नली पैरा कभी नहीं कहूँगा, ठीक है, हाँ प्राइमेट्स में 0.3 आवर्स पर 10 kg बॉडी वेट बढ़ता है, जो बॉडी वेट बढ़ता है तो 0.3 आवर्स ये बढ़ जाती है। 0.3 आवर्स कितने बनते हैं? 20 minutes. 20? नहीं 15 और जाहिर है जब आप रिड्यूस ज्यादा करोगे तो फेलियर रेट भी ज्यादा होगा, ठीक है, दैट्स सर। ये वो बातें हैं जो आपको, जैसे वो फार्माकोलॉजी में दे यूज्ड टू टेल अस कि और कुछ तो समझ नहीं आ रही थी, नोजिया वॉमिटिंग डायरिया में, ठीक, हाँ उसके अलावा फिर तो एलर्जी हो जाए। अच्छा, सिजेरियन बर्थ के चांसेस देख लो कि 50 to 60 वाला BMI हो तो 60%, otherwise 46%, and it's not an easy section. Believe me, it's not a straightforward section. You're going into a tunnel, and so I do, which is normally shunned upon, जिसको मुझे बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ी हुई हैं by Dr. Rashid himself. I take out the uterus. Okay? I always exteriorize the uterus, which is, people hate that. Okay? But everybody abroad does the same thing. Just, I'm not saying it's justified. Huh? Stitching is easy. इसका तो ये होता है कि I remember मैं जलील हुआ था और मुझे उस वक्त डॉक्टर राशिद की बात याद आई थी कि बाहर एक पेशेंट थी जिसका BMI मेरे ख्याल है 50 के करीब था, तो I as usual बच्चा निकला तो I took out the uterus, uterus नहीं खड़ा हो क्योंकि बाकी हर तरफ पेट था, ठीक है, तो यूजुअली तो होता है ना यूट्रस का बैठ जाता है तो आप उसको पकड़ के स्टिच करना शुरू कर, ये था कि यूट्रस का इतना ज्यादा था कि वो यूट्रस यूं था 90 डिग्री, तो मैं उसको दोबारा अंदर डाला, कभी से बंदी हुई, लोगों ने बेइज्जत किया आगे पीछे, ठीक है, और फिर वहां से तो इसलिए be careful what you do if your reflexes are हाँ लेकिन ये होगा, ये सबके साथ होगा कभी ना कभी, लेकिन ठीक है, अगर आपको लगे कि actually it's absolutely right, he was absolutely right, uterus should not be exteriorized, if you think, Why not? हाँ तो हम सा एक तो होता है कि उसको पोस्ट ऑपरेटिव पेन ज्यादा होती है, ठीक है, लिगामेंट्स पुल होते हैं, उसका भी जवाब है वैसे, लेकिन चलो because he says it, and the other thing is, जिस तरह have you ever noticed Dr. Suhail doing a myomectomy? Yes. Does he ever touch the uterus? No. Why? Regions नहीं बनती, हाँ काफी लोग नहीं टच करते, हाँ काफी लोग नहीं टच करते, ठीक है, because the hypothesis is, again it's a hypothesis, but still the thing is कि GK they say कि GK it's not good, and obviously something which Alami has kept inside should not be touched until unless ज़्यादा मसला हो जाए, so I absolutely believe a straightforward section, keep it inside. Some of us have really bad habits and we try to cope with them, but I just hated doing it inside. Like मुझे पड़ा हुआ आदत, उधर सारी दुनिया बाहर निकालती है,
क्योंकि कोई टेयर ना आ जाए, उसको देखने के लिए जब आपको शक पड़े कि जी फुली डायलेटेड है और आपने बच्चा निकाला है या तो फिर देयर इज गुड चांस कि आपका थोड़ा बहुत कहीं टेयर आ गया हो, तो उसको तो डेफिनेटली आपको बाहर निकालना चाहिए। दूसरा, अब whenever you exteriorize the uterus, it thinks the uterine artery, so the bleeding is a bit less, so that's another thing. But ideally speaking, जैसे ही you get the baby out, what people do is because बाहर blood loss check हो रहा होता है, so she'll be, the nurse will always be telling you आधार हो गया भाई, ठीक है, and then आधार का मतलब है you need to file an incident report in the theater के जी के आए थे जनाब, तो जबरदस्त सर्जन साहब, तो आज भी 1 लीटर हुआ है, तो आप इस तरह जब बात करते रहेंगे तो 1 महीने people actually look at these things and then they ask you and then they call you into question and say कि भाईजान तो सेक्शन करना आता है, ठीक है, and can you actually do it properly? That's the whole thing. And then because you're called upon and there's a check on you, then you start to think more about, actually it's a selfish thing, आपकी अपनी बेइज्जती हो रही होती है तो आप उसको थोड़ा सा आप उसको माइंड करना शुरू कर दो और आप देखते हैं कि हालात ठीक हो या नहीं, and that happens to everyone. If the professor does it, the professor will be called upon and say, Baijan, every time you touch this any patient, your blood loss is 1.5, 1.2, one more than 1 at a section, it's a substantial blood loss. So that's the reason. So you need to constantly check yourself. ऐसी कोई बात नहीं. So as soon as the baby is out, the first thing they do is they tap. वो क्या होते हैं? Green arm clamp. ठीक. Okay, so then बस फिर लंबा हो गया. टोलैक का मतलब पता है? ये जान के गया था, क्योंकि मैं बोर हो गया तो मैं ऐसे लिखा नहीं जा रहा. Trial of labor after section. ठीक है? That's a vaginal birth. Okay? That's not a trial. So what you every time you are seeing a patient or you trying to deliver a patient or you make a plan that I'm going to try to deliver this patient, you're giving her a trial of labor. It's not a VBAC. VBAC is once you're successful and the patient and the baby live, then it's a VBAC. Okay? So it's not contraindicated, but मेरा ख्याल में बड़ा हौसला चाहिए 15 to 30%, अगर properly obese है. हाँ अभी आ रहा है आगे मुबारक हो, तो टेंशन ना ले. अच्छा, रीजनल का पता है तुम लोगों को? मल्टीपल टेप्स होगी, ड्यूरल पंक्चर हो सकता है, फेल्ड एनाल्जेसिया हो सकता है, हाइपरटेंशन हमेशा होती है, जैसे ही उससे लगेगा एपिड्यूरल या स्पाइनल जैसे चीज लगेगी, एक्सपेक्ट बिट ऑफ हाइपरटेंशन. जनरल में कुछ डिफिकल्ट है और इसी वजह से मेरा ख्याल है. कितना मिनट आ गया? तू उठा है अब ना बेटा? हाँ तो ठीक है. अच्छा, मैक्रोसोमिया जिसकी बात अभी कर रहे थे, has anybody seen a proper shoulder dystocia? Congratulations, good. Dysfunctional labor. Why is there dysfunctional labor? What is dysfunctional labor? Are we familiar with the concept of a partogram? Have we actually drawn it? Checked it and took करके वो बनाए वो? Sometimes कैसा बनता? अगर बेटे वो ये है ना पार्टोग्राम वाला बात, और अगर वो इस तरह जा रहा है, एक कौन सी लाइन होती है वो 45 डिग्री पे जा रहा है, 90 डिग्री है ना, ये यूं है 90 डिग्री का एंगल है, अगर वो 45 पे सीधा जा रहा है तो रीजनेबली ओके. अगर वो उससे ऊपर जा रहा है तो सब भी ठीक है लेकिन तेज है, और अगर वो यूं हो गया ठीक है और आगे नहीं जा रहा और इस तरह हो जा रहा है, प्लेटो हो गया या नहीं बढ़ रहा, that's a dysfunction level. So it could be anything. Could be the uterus not responding to you not being able to pick up the pains properly, which is usually the case. लेकिन और दूसरा ये है कि आपने उसको मॉनिटर ठीक तरह नहीं किया, जिससे पेन्स कम आ रही हैं, आप समझ रहे हो उसे मॉडरेट आ रही हैं, ठीक है. पेशेंट का भी अपना होता है उसमें काफी, if she is not comfortable then that's an issue. I mean, आप लोग ने काम किया है सर्विसेज जनाब वगैरह?
तो वहाँ से बड़ा अच्छा एपिड्यूरल लगता था। अल्लाह के वाले छोड़ के आज तो आवाज से पता करते हैं मेरा ख्याल है डिलीवर होने लगी। ऐसे ही होता है हर चीज हाँ शाबाश well done। तो नहीं मैं 1-to-1 करवाया हुआ है डॉक्टर साहब ने, काफी बेदर्दी से। तो ठीक है, ऑपरेटिव इंटरवेंशन ज्यादा होती है, जेनिटल ट्रैक्ट लैसेरेशंस होती हैं, टीपीएस ज्यादा हो जाता है ऑब्वियसली, दैट्स इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये भी पोस्टमार्टम ही चल रहा है। ये वीटीई बार बार होता है। आर वी गिविंग प्रोफाइल, हम एपिरिन देते हैं ये लो मोलेक्यूलर वेव? किसी सर ओबीस में देते हैं। वैसे नहीं देते? नहीं सब नहीं देते। चलो क्यों पूछा करो, इस पे भी बात होनी चाहिए क्योंकि इट्स पोटेंशियल स्ट्रोक जो है ना बेटे, पता नहीं स्ट्रोक को हम बड़ी लाइटली लेते हैं, स्ट्रोक बड़ी बड़ी चीज है। और जो the women who are actually who conceive pregnancy is a hypercoagulant state, you know that. So there is increased chances of her having this sort of an event if you don't give it, provided plus particularly when you're giving a when doing a C-section for it. So that means surgery हुई है, she'll be dehydrated from the surgery, मतलब मेरे तरह का surgeon of blood loss, then the next step would be क्या था, हाँ hypercoagulability तो चल रही है ना, उसके अलावा stress है, ठीक है, और वो बेड पे है, वो मेरे ठीक है, तो she's immobile, तो मेरे ख्याल में उसको तो 100% देनी चाहिए और हर लड़की को देनी चाहिए, चाहे आप लोएस्ट डोज दे लेकिन उसे दो जब तक वो उसका कैप्चर आउट नहीं होता एंड शी डजंट स्टार्ट वॉकिंग अराउंड एंड ड्रिंकिंग वाटर प्रॉपर, तो उसको देनी चाहिए, ठीक है। सेक्शन के बाद ये पूछो, और आरसीओजी की गाइडलाइन है, उसके 2-3 लाइनें पढ़ के चले जाओ। और इम्पोर्टेंट, वंस यू क्वेश्चन या वंस यू से दिस टू समबडी एल्स, the reason why I find you people and start talking about things is I'm trying to remember it myself. याद रखो, that's the easiest way to यादोफाई anything is to teach people, या किसी से बात करो उसी टॉपिक को दोबारा जो पढ़ के आए हो उसको देखो, and when you are conveying this message to the other person, then you will actually realize कि what are your own shortcomings as far as saying that thing is concerned, और आपको वाकई आता है कि नहीं आता। That is, हम लोग हॉस्टलों में पले पड़े, that was our basic thing, that is how we used to learn, there are two people discussing और आप वैसे ही बैठे हुए हो तो आप सुन लेते हो, तो फिर आप यहाँ से 4 लाइनें पकड़ के अगले कमरे में चले जाते हो, वहाँ आके उनको टेंशन देते हो, उधर जाके that's how you do things, ठीक है। अच्छा, the next one is infection। infection क्या है? कोर वैस्कुलरिटी होती है इनके अंदर, और दूसरा होता है कि इनमें वो अगर जगह ये मैंने क्या रिस्क लिखा है, रिस्क अपॉलॉजीज ये मैं पहले तो पढ़ रहा हूँ। अच्छा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन वजन की वजह से हो सकता है, पर्टिकुलरली अगर आप किसी पेशेंट को जो कि ओबीस है, आप पोस्ट ऑपरेटिवली उसको क्या दें, ओपियोइड टाइप चीज दें, ठीक है। नैल्पिन ओपियोइड होता है, नैल्पिन क्या है? I have no idea what that is, but that's okay. Maybe it's another opioid. But if it's an opioid, then just be careful with dealing with these people, because then more probably they'll cause respiratory depression. And ये वाला आखिरी वाला याद रखना, ये इसके साथ related है, I don't know how, लेकिन है, ठीक है, ध्यान रखना। अब ऑफस्प्रिंग की पे जाते हैं। So an obese lady is prone to a lot of things, but never forget the last line which I wrote. I think somehow I've seen a few cases like that. The more obese they are, probably the more teary-eyed, emotional, chup they are after delivery. Baby blues कब तक होती हैं? तीन से 5 दिन एक्सपेक्ट करो, पहले हफ्ते में ही हो जाता है जो होता है बेबी ब्लू प्रॉब्लम। अगला उससे अगला वाला क्या? डिप्रेशन।
और उससे अगला वाला क्या है? साइकोसिस का डिप्रेशन से डिफरेंशिएशन क्या है? delusional आ जाती है कि जी this baby wants to kill me. But sometimes it's not delusional. The ass wants to kill me. That's actually true. Okay, and you know, so don't think he's power or something. Just take it easy, you know. But yeah, you know. So we're founding this, we're forming this society where you know बताया हुआ है ना मैंने आप लोगों को society का. हाँ 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 ये हाँ. उसका society होगी, will protect you from the SARS and the non-BPD. So what we do is we offer our services because once you're a member, then you have to kill other people's SARS and all. So you know that's how that's what happens. ठीक है? But don't worry about it. उसको याद रखना. This is an often figure has delivered a baby, and you see her. अपने एंटीनेटल पोस्टनेटल चेकअप कराने आई है, इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरीली रिक्वायर्ड, आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस, सी हाउ टू, ठीक है, बिकॉज़ इट्स अ नेचुरल थिंग डॉक्यूमेंटेड विद एविडेंस ड्यू टू हार्मोन्स ये मसले चलते हैं, इसलिए ये भी एक चीज है. सो इट्स नॉट जस्ट कि आपने बुखार होगा तो मैंने कुछ करना है और ये होगा, जस्ट आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस, probe a little bit and see whether she does need help or not. Maybe a few months of antidepressants will do her a lot of good. Maybe talking to somebody will do her a lot of good. But whatever it is, as a doctor, I think this is extremely important, as important as any other masla that you try to solve. So, congenital anomalies, neural tube defects, and remember, even if you take that folic acid thingy, still there is a more risk for the baby as far as neural tube defects are concerned. Cardiac होते हैं, orofacial होते हैं, limb defects होते हैं, no idea how, but होते हैं, ठीक है. Perinatal mortality ये याद रखने वाली बात है, ये just to warn the girl when she's trying to conceive. Every 5-unit increase in BMI results in an increase in fetal deaths, stillbirths, perinatal deaths, neonatal deaths, and infant deaths. So it will be in her best interest preconceptionally to actually reduce weight. Preterm births, we've already told, and all and everything related with that. Large birth rates, as I told you, you know, जो बच्चा ऐसा होता है उसको issues हो जाते हैं आगे चल और आपको समझ भी नहीं आती, हर चीज हो सकती है. अब ये वाली बात important है for every mother who is potentially obese. Childhood obesity हो जाती है और बच्चे में आगे जाके दान खास्ता he can develop a cardiac metabolic morbidity, जिसमें आपकी cardiac disease भी आती है, जिसमें आपकी diabetes भी आती है, जिसमें आपकी hypertension भी आती है, vascular, metabolic and inflammatory. ठीक है, तो vascular और metabolic का तो तुम्हें अंदाजा हो जाना चाहिए, तो inflammatory भी है. One parent obese है तो 2 से 3, both है तो 15-fold increase. Hypertension, hyperglycemia, ये सारी कुछ नीचे लिखा हुआ है, ढेर सारी चीजें, ठीक है. इसलिए ये important बात है. These are documented proofs. 25 साल उन्होंने स्टडी करके इन बच्चों को फॉलो अप किया. नहीं होता hyperlipidemia. When the guy is so thin, there was a friend of ours who was very thin, used to exercise a lot. And he knew his family has hyperlipidemia. He runs, I think, Singapore, he runs about 8-9 kilometers a day. He still had stents put in at the age of 42, 41, just because the fact that basically the family history थी. और हम उसका hypothesis ये दे रहे हैं, the people who are trying to find the gene. I think they have isolated the gene also, but ये तो definitely होता है ना किसी के fetal life में baby के ऊपर जो चल रहा होता है काम उसकी वजह से चल रहा है, ठीक है. तो it can either be transient or the change can be permanent. The expression of those genes, not the DNA itself. ये important बात है, ये last bit है. इसके बाद तुम लोग cricket खेलो. Neurodevelopmental, अब ये check करो, खुद पढ़ लो. ADHD क्या होता है? Attention deficit hyperactivity. My children say that I have it. Okay. Huh? This is what they say. Yeah, sure. Attention Because deficit hyperactivity.
So disorder. then I ask everybody else, कि जी के remote कहाँ है, तौलिया कहाँ है, मेरे जूते कहाँ है, ठीक है, because I'm completely dependent on other people. Okay. So that's why they say that you have ADHD. Okay. आखिरी वाला पढ़ा? Last. हाँ, दमे से ऊपर, दमे की बता रही. हाँ. I would like you to have a little bit of a read if you have the time. What is reward-driven behavior? Whether it's abnormal or not. Is it okay to be, you know? I think it's when I was reading it, I was like kind of surprised. मैंने सोचा कि इसको नहीं लिखता मैं फिर मैंने कहा चलो इस पर 2 मिनट बात कर लेंगे शायद तुम लोग को point of view मिल जाए. Yeah, you read about it and tell me. Because reward-driven behavior is fundamental to humans also. But at the same time, if you actually want to be a better person, then it should not be really there. So in a way, that's sort of a thing. But reward-driven behavior, obviously, ups and downs हैं. होता है लेकिन Assalamualaikum, sir. Okay. So that's it. Basically, asthma is the last bit. It is again due to. Huh? Bolo, batao. What were the 3 things? Probably cytokine. Okay. So everything that you can justify your original pathobiology, किसी न किसी जगह पे आप इसे डाल के इस तरह याद करने की कोशिश कर सकते हो. But I think just bear that in mind. It's not just the only reason I'm discussing this is because it's very common. But दूसरा ये है कि we tend to overlook the fact that it's not just delivering a healthy baby. It's the follow-up, and in particular in this thing, what they have experienced is that the offspring. You won't find this thing discussed in I think hardly any other obstetric topic. कि बच्चे को उन्होंने इतना follow किया हो कि अगर माँ obese हो तो hypertension को भी करते होंगे बाकी सबको भी करते होंगे लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा काम हो रहा है just because of the fact that they have found out that there is a lot of issues going on with these children, so that you need to just be careful of that. Take it. Next time we'll do the how we care for them, and in the midweek sometime I'll drop into the live ward and we'll say hello to APS, PPS, whatever I can think of. Assalamualaikum, sir. वालेकुम, थैंक यू. मेरे 5 मिनट आज भी खाली हैं. हेलो. पिछले